Good afternoon. Today we are going to learn associative property. Okay, we have already discussed about closure property, then we have discussed about commutative property, and now we are watching associative property for rational number. Okay, so as we have discussed the previous property, first we will discuss for whole number, then for integer, and then we will lastly discussion for rational number, but with the examples. Okay, सो अगर आपने वो दो प्रॉपर्टीज़ नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए और साथ साथ में कंटिन्यूटी बनाए के रखिए. अब एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्या कह रही है उसको समझिए पहले, उसका मीनिंग क्या है. तो एसोसिएशन जब बनाते हैं हम, राइट, ग्रुप बनाते हैं, एसोसिएट प्रॉपर्टी में होता क्या है पहले इसका लॉजिक समझिए आप. कि सपोज मान लो कि हमारे पास 3 होल नंबर्स है, हमारे पास 3 डिफरेंट होल नंबर्स है ए बी एंड सी. ओके, तो फर्स्ट वी विल मेक ग्रुप ऑफ ए एंड बी, देन वी विल ऐड सी. समझ में आ रहा है? फर्स्ट वी विल मेक ग्रुप ऑफ ए एंड बी, देन वी विल ऐड सी. दिस इज फर्स्ट पॉसिबिलिटी, देन वी कैन चेक फॉर. ओके, ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी है. देन वी कैन मेक ग्रुप ऑफ बी एंड सी एंड वी कैन ऐड ए. That is our second possibility. This is our second possibility. Okay, then the third and last is we can make, then the third and last is we can make group of C and A and we can add B. This was our second, so this is second, and now we will see the third one. Okay, now let's see. Suppose, so we can write that if A, B and C are 3 different whole number, then for addition we can write A multiple A plus B plus C. A plus B plus C. So if A, B and C are 3 different whole numbers, then we can write A plus B. We will first make group of A and B, then A plus B, then we will add C. Then we will add C, then we will make group of B and C, B and C, then we will add A, and lastly we will make group of C and A and we will add B. If the answer, ध्यान से सुनो, if the answers of these 3 equation is similar, अगर ये तीनों का आंसर इक्वल आता है या किसी भी दो का भी आंसर सिमिलर आता है तो वी कैन से दैट दे आर एसोसिएटेड. उनको हम अलग अलग ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं. ओके, चलो होल नंबर के लिए सर सबसे पहले एडिशन के लिए देख लेते हैं. सबसे पहले एडिशन के लिए फर्स्ट आई विल डिस्कस एडिशन, जैसे कि मैंने अगले वीडियो में भी जैसे डिस्कशन किया था ऐसे ही एडिशन. और एडिशन में पहले क्या करते हैं, होल नंबर्स ले रहे हैं. सो वी विल टेक होल नंबर्स. ओके, ध्यान से देखो, ये a is equal to 1 I am taking, b is equal to 2 I am taking, and c equal to 3 I will take. Clear? Okay, first I will do a plus b. I will make group of a plus b, then I will add c. In the second, I will make group of b and c, then I will add a. In the third one, I will make group of c and a, then I will add b. Is it okay about it? So we can write 3 different possibility. Okay, first add a and b, so it is 1 plus 2. Sorry, it is 1 plus 2, so it is 1 plus 2. Then I will add 3. What is 1 plus 2? 3. What is 3 plus 3? It is 6. Okay, b plus c, it is 2 plus 3. Then I will add 1. ब्रैकेट को पहले सॉल्व करना चाहिए. It is 5 plus 1. Answer is 6. Then I will add 3 plus 1. 3 plus 1. Then 3 plus 1. Then I will add b. b is equal to 2. Then I will add b is equal to 2. Now what is 3 plus 1? 3 plus 1 is 4. Okay, 4 plus 2. Your answer is 6. Your answer is 6. Now just cross verify your answers. Just cross verify your answer. 6 equal to 6 equal to 6. That means it is 6 every time. Okay, so we can say that addition of whole number is associative. Okay, now let's check this for integers. I will take a equal to minus 1, b equal to plus 5, and c equal to 6. I have taken 3 these integers. First I will do a plus b, group of a plus b, then I will add c. Okay, what is a plus b? तो देखो क्या करेंगे, -1 plus 5 plus 6
-1 plus 5. What is -1 plus 5? Plus 4. Plus 4 plus 6. Answer is 10. Answer is 10. Okay. Now addition of B and C. B plus C. Then addition with A. What is B? B is 5. C is plus 6 plus A is -1. Don't forget to put minus sign. Okay. What is 5 plus 6? 11. 11 plus minus. You better know. Answer is 10. Answer is 10. Okay. Now next one. We will add C plus A. Then we will add B. फर्स्ट वी विल मेक ग्रुप ऑफ सी प्लस ए देन बी. देखो अलग अलग का ग्रुप बनाया हमने. सी, व्हाट इज सी? 6. 6 प्लस -1. 6 प्लस -1 प्लस 5. व्हाट इज 6 प्लस -1? दैट इज प्लस 5. सो 5 प्लस 5. व्हाट इज 5 प्लस 5? आंसर इज 10. सो वी नो दैट in each and every group, whether it is A plus B plus C or B plus C plus A or C plus A plus B, our answer is 10 every time. So we can say that addition of integers is also associative. Addition of integers is also associative. Okay. Now let's check for rational number. अब rational number के लिए आपको याद करना पड़ेगा थोड़ा LCM और HCF. लेकिन एलसीएम पे हम देखेंगे कैसे हम फ्रैक्शन का एडिशन करते हैं. सपोज ए इज एनी रेशनल नंबर 1/2, बी इज एनी रेशनल नंबर 1/3. वी आर एडिंग विथ सी. सी इज इक्वल टू 1/4. फॉर इजीनेस आई एम टेकिंग दिस नंबर. ओके. एक एक स्लाइड में लिखूंगा, ध्यान रखना. ए प्लस बी प्लस सी. फर्स्ट ए एंड बी का हम एडिशन कर लेते हैं. सो ए इज 1/2 प्लस बी इज 1/3 और उसको ऐड करते हैं 1/4 के साथ. Okay, what is the addition of this? 3 1s are 3, 2 1s are 2. It is 3 plus 2, 3 2s are 6 plus 1/4 plus 1/4. ध्यान रखना एडिशन एंड LCM में. 3 plus 2 is 5. 5/6 plus 1/4. और 5/6 प्लस 1/4 में क्या होगा? देखो 5/6 एंड 1/4 डिनोमिनेटर्स आर 6 एंड 4. 6 एंड 4 का एलसीएम क्या हुआ? तो 6 एंड 4 का एलसीएम हो जाएगा 12 होगा. अब 5 को 12 लाने, नीचे देखो 6 है ना, तो 6 को 12 लाने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना होगा? मल्टीपल 2. तो ऊपर 5 मल्टीपल 2 कितना हो जाएगा? तो 5 मल्टीपल 2 हो जाएगा 10. 4 को कितने से मल्टीप्लाई करना होगा? 3 से. तो 1 इंटू 3 वो हो जाएगा 3. योर आंसर इज 13/12. 13/12 इज अवर आंसर. ओके. प्लीज माइंड वेल. हमने 1/2 प्लस 1/3 किया, उसका आंसर मिला 5/6 और उसको मल्टीप्लाई किया हमने 1/4 के साथ. क्लियर? आंसर याद रखना 13/12. एक और हिंट देता हूँ आपको. 1/2 प्लस 1/3 कैसे करोगे आप? तो देखो इजीली में हम देख लेते हैं. 2 and 3 नीचे मल्टीप्लिकेशन कर दो. तो यहाँ पे मैं 2 and 3 का मल्टीप्लाई कर देता हूँ. बाद में ये 3 and 1 का मल्टीपल करो. तो 3 1 जा क्या हो गया? 3. फिर ये 2 into 1 का मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं. तो 2 1 जा 2 हो गए. तो 3 plus 2 क्या हुआ? ऊपर 5. नीचे क्या आंसर आया? 6. और ये भी आप क्रॉस चेक, अगर मैं आंसर डायरेक्ट लिख रहा हूँ तो आप ऐसे उसको चेक कर सकते हो. अगर 1/3 प्लस 1/4 है तो क्या करोगे? नीचे क्या हो जाएगा? 3 इंटू 4. अगर आपको एलसीएम नहीं पता है तो ये 4 इंटू 1 क्या होगा? 4. ये 3 इंटू 1 क्या होगा? 3. व्हाट इज 4 प्लस 3? 7. 7/12. आंसर इज 7/12. ओके. नाउ लेट्स चेक अवर सेकेंड ग्रुप. फर्स्ट ग्रुप वी गॉट आंसर 13/12. बी प्लस सी उनका ग्रुप बना है, बाद में ऐड करते ए को. बी क्या था? 1/2. सी क्या था? 1/4. किसके साथ ऐड करोगे? सॉरी, बी था 1/3 और ए के साथ ऐड करेंगे. ए होगा 1/2. 1/3 1/4. ये अभी मैंने लिखा 7/12. 7/12 आपको पता चल गया होगा. प्लस 1/2 प्लस 1/2. ओके. नाउ यहाँ पे क्या होगा? एलसीएम 12 and 2 का एलसीएम क्या होता है? तो 12 and 2 का एलसीएम होता है 12. ओके. हम बाद में उसकी डिस्कशन करेंगे. 12. तो देखो 7 के पास तो 12 था तो कोई मल्टीपल करने की ज़रूरत नहीं है. लेकिन 2 को 12 ले जाना है तो 2 को मल्टीपल करेंगे 6 के साथ. एंड ये भी 1 को मल्टीप्लाई किया 6 के साथ. तो ये हो गया 6. कैसे आया वो देख लेना एक बार. 7 + 6 कितना हुआ? 13. 13/12. 13/12. That is the same answer we got for the first group. First group we got the same answer. Okay. Now last group we will take C plus A. C plus A plus B. C plus A plus B. What is C? 1/4. What is A? 1/2. Plus what is B? 1/3.
Okay, 1 upon 4 plus 1 upon 2. LCM is 4. 1 plus 2. I will write directly. 1 plus 2. Plus answer is 1 upon 3. 1 plus 2 is 3. 3 upon 4 plus 1 upon 3. LCM of 4 and 3. It is 12. 3 को 4 लाने के लिए मल्टीपल करना होगा. 3 को 4 लाने के लिए मल्टीपल करना होगा, मतलब 4 है, यहाँ पे 3 से मल्टीपल करो, ऊपर भी 3 से, तो ये 3 3 जा क्या हुआ 9, और यहाँ पे 4 से मल्टीपल करो, ऊपर भी 4 से मल्टीपल होगा तो 4. 9 प्लस 3, 9 प्लस 4 दैट इज 12. 13 डिवाइड 12. That means we got our answer 13 divided by 12 in each and every case. So write down the statement. So we can write for integers, for whole numbers, integers and rational number, they all are associative for addition. They all are associative for addition. Please make a note, associative for addition. We have already seen the proof also, so that we can write a general form. A plus B plus C is equal to B plus C plus A is equal to C plus A plus B. Don't forget to write this. Okay, so this is our associative for a whole number, integer and rational number for addition. Okay, now let's check for the multiplication. Now multiplication. A is equal to 1, B is equal to 3 and C is equal to 4. Okay, now A into B into C. This is first group. Second group, B into C multiple A. Third group, C into A multiple B. What is A? A is 1 into 3, C is 4. 3 ones are 3, 3 into 4, answer is 12 for the whole number. B into C, B is 3, C is 4, A is 1. 3 fours are 12, 12 ones are 12, that is 12. C is 4, A is 1, that is 3. 4 ones are 4, 4 into 3, answer is 12. Is it okay? So we can say that multiplication of whole number is associative. सारे के सारे ग्रुप में आंसर इक्वल आया. लेट्स चेक फॉर इंटीजर्स. A is equal to any integer minus 7, B is equal to any integer plus 2 and C is equal to, I will take minus 1. Make first group A multiple B multiple C. Make second group B multiple C multiple A. Make third group C multiple A multiple B. Clear? What is A? A is minus 7. Okay, so bracket change कर लेंगे हम. A is equal to minus 7. Minus 7 into B is equal to 2. C is equal to minus 1. Now minus 7 into 2, that is minus 14. Minus 14 into minus 1, answer is plus 14. B is 2. B is 2. C is minus 1. 2 into minus 1, then multiplied with minus 7. 2 into minus 1, answer is minus 2. Into minus 7, minus minus plus, that is plus 14. C into A, what is C? C is minus 1. What is A? That is minus 7. What is B? That is 2. C into A, minus minus plus, that is plus 7. 7 into 2, that is 14. So we can check that in each and every case we got the same answer. Okay, so multiplication of integers is also associative. Okay, now let's check for the rational numbers. Each and every example we are doing. Same example I will take. A is equal to 1 divide 2. A is equal to 1 divide 2. B is equal to 1 divide 3. C is equal to 1 divide 4. A multiple B multiple C. What is it? Multiplication तो डायरेक्ट ही होगा. 1 multiple 1 divide 2 multiple 1 divide 3 multiple 1 divide 4. 1 1, that is 1. 3 2s are 6. 6 into 1 divide 4. So see, 1 1s are 1 and 6 4s are 24. Answer 1 divide 24. Now B into C, ग्रुप बना दिया. मल्टीपल विथ A. B क्या होगा? 1 डिवाइड 3. C क्या होगा? 1 डिवाइड 4 एंड A क्या होगा? 1 डिवाइड 2. 1 1s are 1. 3 4s are 12. Multiple 1 divide 2. Answer is 1. 12 2s are 24. Answer is 1 upon 24. And for the last group, C multiple A multiple B. C is 1 divide 4. A is 1 divide 2 and B is 1 divide 3. 1 1s are 1. 4 2s are 8. Into 1 into 3. 1 1s are 1
8 3s are 24. So we got the same answer. So we can say that for multiplication, whole numbers, integers and rational numbers, they are associative for multiplication. Clear? और एक चीज़ यहाँ पे मैं डायरेक्टली आपको कह दूंगा कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन दे आर नॉट एसोसिएटिव फॉर एनी नंबर. दे आर नॉट एसोसिएटिव. मतलब सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन आप अपने आप क्रॉस चेक कर सकते हो. ये आपको मैं होमवर्क में दूंगा कि सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन they are not associative for any numbers, whole numbers, integers and a rational number. So for associative property we can write a plus b plus c equal to b plus c plus a. grouping कर रहा हूँ मैं. And last one we can write c plus a plus b. And for multiplication I can write a multiple b multiple c is equal to b multiple c multiple a is equal to c multiple a multiple b. These are general forms. Okay, I hope your idea is very clear. In the next video we will see distributive property, the most important property, distributive property for multiplication over addition and for multiplication over subtraction. So we will continue our session for distributive property. In the next video we will check it, distributive property. Thank you so very much for watching this video. Stay connected with us, stay healthy.